Hello, a very good afternoon, everyone. Welcome to Sri Chaitanya Academy NEET channel. Hope you all are doing fine. So this is Dr. Priyanka De, your zoology faculty, and this is the time to revise human physiology chapters, right? So when we have seen the question paper of NEET 2026 that happened on 3rd of May, we saw that many questions were asked from human physiology chapters. So around 11 questions you got from human physiology, right? So that's why this session is going to be important क्योंकि human physiology का weightage हमेशा ही ज़्यादा रहा है, right? So today we are going to discuss 6 chapters of human physiology that includes chapters like breathing and exchange of gases, body fluid and circulation, excretory products and their elimination, right? Locomotion and movement, neural control and coordination, and chemical coordination and integration chapter. So I hope you all are ready for it. जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो, एंड हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैम बोल दो इन द चैट बॉक्स. आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? ह्यूमन फिजियोलॉजी सेशन के लिए होप आप सभी रेडी हो. या परफेक्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे. यू गाइज आर गोइंग टू गेट perfect notes, okay? So you guys are going to get perfect notes from all the chapters, all the important points I'm going to cover. So please make sure that you stay till the end, right? And if you have any doubts, any questions, any queries, please make sure that you are asking, right? तो 6 चैप्टर हम कवर करने वाले हैं बच्चों. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के चैप्टर हम कवर करेंगे. ग्रेड 11 बायोलॉजी के ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 11 से 13 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं री-नीट में भी. रेडी एवरीवन? ओके. सो अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्विक रिविजन आप करना चाहते हो, तो यू कैन just take the PDF and just go through the all important points from here. Okay? तो चलिए 6 चैप्टर हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं. So I am going to cover breathing and exchange of gases chapter, body fluid and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, and chemical coordination and integration chapter. So all these chapters we are going to cover, right? Now सबसे पहले हम देखते हैं breathing and exchange of gases chapter से क्या important points हमें कवर करने चाहिए नीट एग्जामिनेशन के लिए, राइट? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्पिरेशन, राइट, एक्सपिरेशन एंड की वॉल्यूम्स, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, जब हम इनहेलेशन की बात करते हैं, रिमेंबर दैट डायफ्राम नॉर्मली इज हाउ dome shaped, right? But at the time of inhalation it will flatten, right? तो हमें ये याद रखना है कि whatever changes are exhibited in the thoracic chamber, the same changes आप देखोगे, observe करोगे in the pulmonary chamber, right? So अगर मैं बोलती हूँ कि because of the diaphragm going down, contraction अगर हो रहा है diaphragm का, dome shape से flatten हो रहा है, so there will be increase in the volume of the thoracic chamber, because of which there will be increase in the volume of the pulmonary chamber, right? ठीक है. कौन से एक्सेस में बढ़ेगा वॉल्यूम? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सेस, राइट? अच्छा, तो याद रखो कि डायफ्राम इंस्पिरेशन के टाइम पे करता है कॉन्ट्रैक्ट और इट फ्लैटन्स. दूसरा जो मसल है जो आपको याद रखना है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी करेगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वजह से द रिब्स एंड द स्टर्नम विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, राइट? तो ये कौन से डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ा रहा है? सो ये कौन से डायरेक्शन में बढ़ा रहा है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा रहा है, थोरैसिक चैम्बर का, पल्मोनरी चैम्बर का. तो इसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? एवरीबडी प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है? ड्रॉप होता है. बॉयल्स लॉ याद करो, बॉयल्स लॉ, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी, और आई शुड से intrapulmonary volume is increasing, pressure is dropping. So intrapulmonary pressure drop हो रहा है, atmospheric pressure से कम हो रहा है, because of which the air is going inside, air rushes in. Okay,
This is the mechanism of inspiration, everyone. Any doubts if you have, just let me know. Any question, any confusion? Yes, everyone? Yes, hello, Mohammed Safia. Okay, keep on asking, bacha. Now coming to expiration, जैसा inspiration में हुआ है, when we talk about normal inhalation and exhalation, the same thing will happen, बच्चा. अब जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे इंस्पिरेशन, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस था, वही सेम मसल्स रिलैक्स करेंगे एक्सपिरेशन में, बिकॉज इट इज अ पैसिव प्रोसेस. व्हिच प्रोसेस इट इज? इट इज अ पैसिव प्रोसेस, राइट. इसमें कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है. नाउ डायफ्राम रिलैक्स करेगा, दैट मीन्स अगेन इट विल बी डोम शेप्ड. फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की. द सेम मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सेम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात करेंगे, तो ये क्या करेगा? अब रिलैक्स करेगा, राइट. नाउ thoracic volume will decrease, thoracic volume will decrease, intrapulmonary volume will decrease, and the pressure is going to increase. Again, Boyle's law. तो जब इंट्रापल्मनरी प्रेशर बढ़ता है, एयर विल कम आउट इन द एटमॉस्फेयर, राइट. नाउ सेम muscles will be functioning when we talk about normal inhalation and exhalation. Forceful exhalation या inhalation के टाइम पे, forceful breathing के टाइम पे, abdominal muscles will then work and contract, right, together with internal intercostal muscle. चलिए अब हम बात करते हैं लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की, राइट. तो पहला होता है टाइडल वॉल्यूम. So tidal volume कितना होता है बेटा? 500 ml, right? 500 ml. So when you normally inhale or exhale, right? So you take in 500 ml of air or exhale 500 ml of air, which is very less, right? But what is IRV? Inspiratory reserve volume. Apart from tidal volume, additional amount of air also you can inhale, और उसे बोला जाता है inspiratory reserve volume, which is around 2500 to 3000 ml. फिर additional volume of air that you can exhale, ठीक है, tidal volume के अलावा additional volume of air जो आप exhale कर सकते हो, वो है 1000 to 1100 ml. फिर बात करते हैं residual volume की. Residual volume वो air है, the volume of air that remain in the alveoli even after forced expiration. अब फोर्सफुली भी एक्सेल अगर करते हो, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके एल्वियोलाई में रह जाता है, और उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. कितना वैल्यू होता है? 1100 टू 1200 ml. ये याद होना चाहिए, ठीक है, रिमेंबर. नाउ रेसिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से भी मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट. Then comes some important capacities, और सबसे important capacity जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है vital capacity, right? Vital capacity का फॉर्मूला होता है tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume, right? And इसमें residual volume included नहीं होता है. When we talk about total lung capacity, definitely it is vital capacity plus residual volume. उसमें residual volume भी included होता है. There is one more capacity is functional residual capacity, right? And this functional residual capacity includes ERV plus RV, right? Expiratory reserve volume and residual volume. So please go through these lung capacities and volumes asked in NEET examination. So जल्दी से note down करेंगे सभी बच्चे. Hello Randeep, how are you? Very good afternoon. Yes, everyone ready? Written? चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया है आपको, ठीक है, let's move on to the वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट एंड डिसऑर्डर्स, राइट. सो जब हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, रेसिडुअल वॉल्यूम की, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, दिस वैल्यूज कुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. सो इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. एंड याद रखो कि ये वैल्यूज हमें एनसीईआरटी वाली ही याद रखनी है. जो प्रॉपर रेंज दिया गया है वो हमें ध्यान में रखना है.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखेंगे, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एक रेंज है दैट इज 2500 to 3000 ml, ERV का एक रेंज है 1000 to 1100 ml, residual volume, the volume of air that remain in the alveoli even after forced expiration, it is 1100 to 1200 ml, and ultimately vital capacity is 3500 to 4500 ml, and total lung capacity is roughly 6000 ml, right? Now अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बाय टू मीन्स ओनली, दो ही तरह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो बाय फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके, सो 97% of oxygen is transported as oxyhemoglobin in our blood. So oxygen will combine with hemoglobin and is transported. जो बाकी का 3% है वो ट्रांसपोर्ट होता है by dissolving in plasma. So there are only two mechanisms by which oxygen will be transported in our body, right? So सिर्फ 3% ही ट्रांसपोर्ट होता है by dissolving in plasma के through, okay? Now coming to carbon dioxide transport. So in our body, the carbon dioxide is transported by three mechanisms, right? Maximum 70% transport होता है as bicarbonate ions. Okay, as bicarbonate ions. 20 to 25%. 20 to 25% will be transported as carbaminohemoglobin. Okay. So याद रखो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाता है. So when carbon dioxide binds with hemoglobin, we call it as carbaminohemoglobin, right? Right? And when we talk about the rest 7% of carbon dioxide, so rest 7% of carbon dioxide is transported by dissolving in plasma. Okay? So ये तीन methods हैं जिसके through the carbon dioxide is transported in our body, and by two mechanism oxygen is transported in our body. Please note it down everyone and keep on asking your doubts. So we are going to cover each and every important point from human physiology everyone. ठीक है, सारे important points हम discuss करने वाले हैं. Please make sure that you guys note it down. Please make sure कि आप मेरे साथ notes बनाते रहो, अपने doubts पूछते रहो, okay? एटलीस्ट कीवर्ड्स जो मैं बता रही हूँ वो लिखना बहुत जरूरी है फॉर क्विक रिविजन. ओके, नाउ कमिंग टू सम डिसऑर्डर्स, राइट? नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस्थमा. जब हम बात करते हैं एस्थमा की, सो इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हीजिंग साउंड. देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हीजिंग साउंड at the time of exhalation, right? साथ ही साथ what exactly it is inflammation of bronchi and bronchioles, right? जब bronchi and bronchioles का inflammation होगा, if suppose this was the airway passage, because of inflammation what will happen? Okay, this passage will become narrow, and that's why there is this wheezing sound at the time of exhalation, right? Obviously there are different triggers for asthmatic attack, right? Allergens एक रीजन हो सकता है, स्मोक हो सकता है, डस्ट एलर्जी हो सकती है, पॉलन एलर्जी हो सकती है, मतलब कुछ भी ट्रिगर हो सकता है, राइट, फॉर दिस asthmatic attack. Now obviously we are going to treat it with bronchodilators. Okay, now coming to एम्फाइसिमा. एम्फाइसिमा बहुत बार नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा. सो एम्फाइसिमा इज डैमेज टू एल्वियोलर वॉल्स. ओके, सो इफ दीज आर एल्वियोलाइज, अगर हम एल्वियोलाई वॉल्स को देखें, बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, सपोज इतना वॉल जो है वो डैमेज हो गया है, डेफिनेटली द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल रिड्यूस, isn't it? तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसेमा. क्रॉनिक कंडीशन है, इरिवर्सिबल है. किसके वजह से होता है? स्मोकिंग के वजह से होता है.
Now the next disorder is occupational respiratory disorder. मैं अगर बच्चों को पूछती हूँ क्या होता है, एवरीबडी इज एबल टू आंसर, बट मैं पूछती हूँ कि कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, ठीक, होता क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट. अगर कोई पर्सन स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, प्रॉपर गियर्स मास्क नहीं यूज किए हैं, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस सिलिका डस्ट, बिकॉज ऑफ दिस एस्बेस्टोस डस्ट, राइट, देयर विल बी इरिटेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ लंग. तो होता क्या अल्टीमेटली, फाइब्रोसिस ऑफ लंग होता है, राइट. सो लंग फाइब्रोसिस विल लीड टू लंग डैमेज. Getting the point? So silicosis, asbestosis are just example of occupational respiratory disorder. Next disorder जो आपको याद रखना है, that is pneumonia. Pneumonia में you will see that the alveoli, okay, so alveoli is filled with fluid बच्चों, okay, filled with fluid. Okay, so this fluid accumulation for NEET examination is because of bacterial infection. Okay, वैसे तो ये बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, किसी से भी हो सकता है, बट नीट में हमें याद रखना है that it is caused by bacterial infection. Which bacteria? Haemophilus influenza. Okay, that is bacteria and not virus. And also Streptococcus pneumoniae, right? So definitely the diffusion capacity of the alveoli will reduce क्योंकि यहाँ पर fluid accumulation हो चुका है. And एक इसका characteristic feature है cyanosis. Okay, cyanosis. What is cyanosis? Cyanosis is bluish discoloration of the extremities, right? Nose tip, fingertips, toes tip, ये सब blue हो जाएंगे. In fact, mucous membrane, ये सब ब्लू हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इनफ ऑक्सीजन इज नॉट डिलीवर्ड टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये डिसऑर्डर सारे ही चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन प्लीज. And yeah, keep on asking, tell me hi, hello, and please make sure that you are liking this session. Like करना है बच्चों, okay? Please don't forget to like the session, very important. Yeah, yes, Rita, attitude boy, सब नाम बताइए अपना please. All good? Understood? Please make sure that you like the session. ओके, तो ये मस्ट नो है फॉर नीट एग्जामिनेशन. चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर. ओके, सो वन बाय वन वी विल गो थ्रू द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की. आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, their count is important. So there are around 4.5 to 5.5 million per cubic mm RBCs in the body. Biconcave shape होता है, disc like shape होता है, right? Nucleus नहीं होता, this is anucleated, right? Mitochondrias भी नहीं होते, तो anaerobic respiration होता है in the RBC, right? Biconcave shape increases the surface area for exchange of gases. Okay, disc like shape help to prevent bursting of RBCs when they are traveling through narrow capillaries, right? So no nucleus, याद रखो. Lifespan is around 120 days, and after 120 days these RBCs are destroyed in spleen. तो उसके बाद कहाँ destroy होते हैं? Spleen में destroy होते हैं after 120 days. Hemoglobin is there that help in transportation of gases, and yeah, they are produced in red bone marrow. Right? So when there is increase in the count of RBC, we call it as polycythemia. When there is reduction in the count of RBC or hemoglobin, we call that condition as anemia. Remember that respiration RBC में कैसा होता है? Anaerobic respiration होता है, सिर्फ glycolysis होता है. Anaerobic respiration is there. Then coming to WBCs, white blood cells or leukocytes. Okay, now their count will be 5,000 to 9,000. Okay, per cubic mm of blood, and it is nucleated.
दो तरह के WBCs होते हैं, granulocytes and agranulocytes. Granulocyte will include neutrophils, eosinophils and basophils. Agranulocyte is including lymphocytes and monocytes. इसमें से phagocytics कौन से होते हैं? Phagocytic cell. Can you tell me in the chat box? कोई मुझे बताएगा phagocytic cell कौन से होते हैं WBCs में? Yes, Mr. Hello. Yeah. Can anybody tell me phagocytic leukocytes? That undergo phagocytosis. इसका मतलब है कि these are amoeba like cells, right? Amoeba जैसे cells that engulf the dead cells or the antigens, right? So phagocytic cells are neutrophils and monocytes. Okay, neutrophils and monocytes. So neutrophils are also most abundant WBCs and उनका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 2 to 4 weeks का सारे WBCs का, ठीक है? They are short lived, not like even erythrocytes. Getting the point? अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से WBC का काउंट बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स, तो एलर्जी के टाइम पे किसका काउंट बढ़ेगा? यू विल से eosinophils. Okay, in fact their count increases at the time of helminthic infection. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा WBC है जो हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज करता है, अब क्या बोलोगे? बताओ मुझे चैट बॉक्स में. Which WBC is releasing heparin, histamine and serotonin? Can anybody tell me? जल्दी बताओ. Explain in English, Sachin. Okay, so can you tell me that which WBC is releasing heparin, histamine and serotonin? Which WBC will release heparin, histamine and serotonin? Yeah, can you tell me? Anybody? English, Hindi? Yes, definitely I can explain. So it is basophil. Write it down. Basophil will release heparin, histamine and serotonin. Okay, and mediate inflammation. Now coming to another component of your blood, that is platelets. Now platelets are not even cells, these are cell fragments. Okay, so these are fragments of megakaryocyte. Okay, so these are fragments of megakaryocytes. So these megakaryocytes, these are cells present in bone marrow and its fragments form the platelets, right? Now this platelet help in blood clotting. So their number or their count will be around 1.5 to 3.5 lakhs per cubic mm of blood. These are cell fragments, lifespan is just 5 to 10 days and they help in blood clotting, and definitely thrombopoietin will help in regulating this blood clotting, right? So just go through this RBCs, WBCs and platelets important points. Okay, so note it down everyone. Basophils, perfect. Sachin, Anvita, very good. Yeah, very good Anvita. Yes everyone, easy. Now let's discuss blood grouping system. So there are different blood grouping system, but the most common one and the widely expected one will be the ABO blood grouping system. So when we talk about blood group A, B, AB and O, remember that blood group is determined based on the type of antigen present on the surface of RBC, right? So when we talk about this blood group A, okay, this blood group A will have antigen A on the surface of RBC, and in the plasma of that individual will be anti-B antibodies, right? Similarly, when we talk about B blood group, the antigen present on the surface of RBC will be B, and in the plasma there will be anti-A antibodies. In AB blood group, both the antigens are there on the surface of RBC,
and no antibodies. No antibodies, when I say no antibodies, means no anti-A or anti-B antibodies in the plasma will be there. And when we talk about O, no antigen on no antigen A and B on the surface of RBC, but both anti-A and anti-B antibodies in the plasma, right? So we know that blood group O is the universal donor, specifically O negative, but O, right? Now this O blood group can donate blood to any individuals having any blood group. Why? Because on the antigen, because on the surface of RBC there will not be any A and B antigen. Getting the point? Now coming to AB blood group. AB blood group is universal receiver, recipient. It can get blood from any other blood group individuals. Why? Why? Because now in their plasma they will not be having anti-A and anti-B antibodies. So whatever antigen is coming, it's fine with them. Getting the point? समझ में आया अभी? Okay. There is one more third type of antigen, that is RH antigen or D antigen on RBC. So if it is present, then our blood group becomes positive. Like if my blood group is B positive, मेरा blood group है B positive. इसका मतलब क्या है कि on the surface of my RBC there will be this antigen present. Okay, together with definitely B antigen. Getting the point? ठीक. So अगर suppose there is RH negative mother and the fetus is RH positive, okay, so in such cases there is a condition of RH incompatibility and we call it as erythroblastosis fetalis. क्या बोला जाता है? Erythroblastosis fetalis. Okay. And yeah, when we talk about blood clotting, remember that whenever there is injury to the platelets and injury to the blood vessels and tissue, there is release of a factor. We call it as thrombokinase. An enzyme complex is formed, or thromboplastin, right? That converts prothrombin into thrombin with the help of calcium ions, right? Now this thrombin will convert inactive fibrinogen into fibrin, again with the help of calcium, right? And then only the blood clot will be formed. ठीक है? So याद रखना है आपको, thromboplastin या thrombokinase enzyme complex is important to convert prothrombin into thrombin. तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज एंड लिखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. या सचिन, Anvita, Rita, yes everyone understood? Please note it down. All the important points of all the chapters we are going to cover. Done? Okay. So if you have understood this, let's see the structure of human heart. So it might seem a bit complicated, but I will explain it. Don't worry. So first of all, we need to understand that human heart will have 4 chambers: the right atria, left atria, right ventricle, left ventricle. Out of these 4 chambers, the right side will be filled with deoxygenated blood and the left side will be filled with oxygenated blood, right? So right atria receives deoxygenated blood through the inferior vena cava and superior vena cava, and then in between right atria and right ventricle there will be the tricuspid valve. Okay, then this deoxygenated blood will be going through the pulmonary artery to the lungs, right? Now oxygenated blood from the lungs will be coming to the left atria through the pulmonary vein. We know it is opposite, right? And then in between left atria and left ventricle is the bicuspid valve, and this oxygenated blood from the left ventricle will be pumped to the body parts through aorta. Okay, so this is how your heart have the basic inlets and outlets, I should rather say. Okay, now when we talk about the septum, remember that interatrial septum will be thin and muscular, interventricular septum is thick and muscular, and atrioventricular septum will be thick and fibrous. Okay,
So this is something that you should know. And also remember, there are papillary muscles in the ventricles, walls of ventricles, which are connected by chorda tendina to the bicuspid and tricuspid wall. So they prevent our AV walls, atrioventricular walls, from collapsing. Okay, so when ventricles are contracting, we don't want our walls to collapse, right? So just note it down, everyone. Just go through it. Yes, got it? Okay. So if this is clear, let's talk about cardiac cycle. So the cardiac cycle, which is of 0.8 seconds. So total cardiac cycle की अगर हम बात करें, it is of 0.8 seconds. And there are three major events in the cardiac cycle, which is the joint diastole, atrial systole, and the ventricular systole. So joint diastole is for 0.4 seconds, atrial systole for 0.1 second, and ventricular systole for 0.3 seconds. So in the joint diastole, all the chambers are relaxing. Remember, in the joint diastole only, the semilunar valves will be closed and AV valves will be opened. And there will be passive filling of ventricles. So atria says 70% of blood will passively come to the ventricle. Then comes atrial systole. So atrial systole means when atrias are contracting, ventricles are relaxing. At this time, you will see there is active filling of ventricle. So 30% of blood from the atria will come down to the ventricles. When we talk about ventricular systole, finally now the AV walls will be closed and ventricles are contracting and semilunar valves will open up. So blood from the ventricle will be pumped to the aorta and the pulmonary artery, right? So these durations are important. Okay. Now coming to ECG wave, which is electrocardiogram. So in electrocardiogram, you will see P wave, QRS complex, and T wave. Now P wave represent atrial depolarization. QRS complex represent ventricular depolarization, and it is the T wave that represent the ventricular repolarization. And very important, the end of T wave, right? The end of T wave marks the end of systole. Okay, end of systole. So a line given in NCERT जो हम usually miss कर देते हैं. So remember this. So ये ECG can be asked in the form of match the following. ठीक है? Now also remember that cardiac output will be stroke volume into heart rate. तो इस formula पे भी simple numericals आ सकते हैं from this chapter. So please have a look, everyone. एक screenshot ले लेंगे हम. Yes. Okay. Now coming to the next chapter, that is excretory products and their elimination. Right? So some important points from the structure of nephron I have summarized. I want you to go through it. That glomerulus will help in ultrafiltration. PCT will help in 70% of reabsorption of water, glucose, and sodium. The descending limb of loop of Henle helps in reabsorption of water, and the ascending limb of loop of Henle is helping in active transport of or reabsorption of NaCl. Right? DCT helps in selective, you can say, secretion of H plus and K plus ion and reabsorption of NaCl, water and bicarbonate ions. यहाँ पे जो water का reabsorption हो रहा है, that is conditional based on the release of ADH. Right? Similarly, when we talk about collecting duct, right, it will also reabsorb water again under the influence of ADH, and yes, there is reabsorption of small amount of urea also. So small amount of urea which is reabsorbed from this collecting duct or NaCl जो यहाँ पर है, so that is increasing the solute concentration in the medullary interstitium ताकि जो urine है वो concentrated हो for more and more water reabsorption from the collecting duct. So please note it down, everyone. Note it
Let me know if written. Okay. Now, so when we talk about ultrafiltration, so urine formation के होंगे तीन steps. There are three steps of urine formation. First one is ultrafiltration. So it happens in the Malpighian body. Malpighian body includes glomerulus and Bowman's capsule. So basically, GFR, glomerular filtration rate, will be around 125 ml per minute or 180 liters per day, which is quite huge, isn't it? So definitely proteins and RBCs are not filtered. ये note down करना है, बहुत important point है, right? And definitely because of this, after this, glomerular filtrate is formed in the Bowman's capsule. Now coming to selective reabsorption, अगर इतना ज़्यादा volume of GFR, glomerular filtration rate है, right? So definitely maximum water and important nutrients will be reabsorbed. So 99% of the filtrate is reabsorbed through PCT or DCT, right? Or loop of Henle. So glucose and amino acids are fully reabsorbed in PCT. Note it down. These are some important points, right? जहां पे मैंने स्टार लगाया है ये इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए. 65 to 70% of sodium and water is reabsorbed in PCT only. Okay. Now coming to tubular secretion, to maintain the pH and ionic concentration of the blood and uh, the plasma, right, and the filtrate and the urine. So definitely there will be secretion of H plus, K plus and ammonia. So it is maintaining the pH of the blood. Mainly PCT and DCT में there will be tubular secretion, and ultimate urine that will be formed will be 1 to 1.8 liters per day. As you can see 180 liters per day हमारा था GFR, वहां से urine output कितना हो गया 1 to 1.8 liters per day, right? So yeah, so go through these three steps of urine formation. Go through these three steps of urine formation, everyone. Right? So if this you have understood, let's move on to the next chapter, that is locomotion and movement chapter. So in this chapter you need to understand that तीन तरह के muscles होते हैं body में. The first one is the skeletal muscle, which is striated muscles. You will be able to see alternate light and dark bands. It is voluntary muscles. It is multinucleated. याद रखो multinucleated cardiac muscle नहीं है, multinucleated है skeletal muscles, right? And definitely it will fatigue very quickly. ये bones से attached है with the help of tendons. रेड मसल्स में ज्यादा मायोग्लोबिन होता है एंड व्हाइट मसल्स में लेस मायोग्लोबिन होता है. दैट्स व्हाई मायोग्लोबिन इज protein that binds with oxygen and it is red in color. So it will be more in red muscles and in white muscles it will be less. Now coming to smooth muscles. So these are non-striated muscles. Smooth muscles are non-striated, not under our control, involuntary. When you will be looking at their shapes, these are fusiform, right? These are spindle shaped fusiform muscles, right? Tapered at both the ends. Uninucleated muscles है ये. इसमें कोई light and dark band नहीं होता है, right? You will find it in the internal organs, in the visceral organs. That's why we are also calling them as visceral muscles, and they are innervated by autonomic nervous system. कार्डिक मसल्स ब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होते हैं एंड दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. सो दीज आर स्ट्राइएटेड बट इनवॉलेंटरी. इंटरकैलेटेड डिस्क होता है इन मसल्स में, जिसे हम जो एक्चुअली गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक. एंड डेफिनेटली इट कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड easily. So these are branched muscle fibers which are striated and involuntary. So write down these differences between all the muscles. So write down these differences between all the muscles. Yes? Easy?
Okay. Now coming to the structure of sarcomere. So this portion of muscle from one Z line to another Z line will be a sarcomere. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मसल है, क्यों? क्योंकि ये Z line है, this is the Z line. Okay, so the portion of muscle between the one Z line to another Z line will be sarcomere. राइट, यहां से यहां तक ये वाला जो लाइन है सेंटर में, दिस इज द एम लाइन. ओके, नाउ दीज रेड कलर फिलामेंट्स आर मायोसिन फिलामेंट्स. ये क्या है? ये मायोसिन है. ओके, नाउ अटैच्ड टू द जेड लाइन दीज ब्लू कलर फिलामेंट्स आर thin filaments, also termed as actin filaments. Now you can see the overlapping of actin and myosin filament, right? Now there will be a central portion here where the actin filaments are not overlapping the myosin filament. So this zone is termed as the H zone. Okay, this zone is termed as the H zone. Okay, so where the myosin filaments are not overlapped by the actin filament will be the H zone. यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है, okay, this is termed as the A band because it will appear darker because of overlapping of actin and myosin filaments. और यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है, where only actin filaments are there, this portion is termed as the I band. Now at the time of muscle contraction, these actin filaments will slide over myosin filaments and the Z line will come closer. तो जब ये Z line close आ रहा है तो सिर्फ actin filament slide हो रहे हैं myosin filament पे and then they are going back, right? So muscle contraction के time पे remember कि H zone is obliterated, इसका length reduce हो जाएगा, I band का भी length reduce हो जाएगा, but the length of A band will remain the same. क्योंकि A band तो across पूरा myosin filament है ना, actin filament तो उसके ऊपर बस slide करके पास में आ रहा है, दूर जा रहा है. So the length of A band will always remain the same. Easy. So just go through it once. This is the sliding filament theory of muscle contraction. Okay. Okay. So next is neural control and coordination. So this is the basic structure of your neurons, right? So neurons have cell body, dendrites and axon. Okay. Now एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में वो है निसल्स ग्रैन्यूल्स, राइट? निसल्स ग्रैन्यूल्स. So Nissel's granules are modified rough endoplasmic reticulum. These are modified rough endoplasmic reticulum that have ribosomes, RNA, and they produce proteins. Now these Nissel's granules you will get in the cell body, you will get in the dendrites, but you will not get in the axon or axon hillock. Similarly, you will see that there will be Schwann cells in the axon. So Schwann cells help in the formation of myelin sheath in the PNS. Oligodendrocytes help in the formation of myelin sheath in the CNS. Right? अब Schwann cells तो हमेशा रहेंगे चाहे जो एक्सॉन है वो माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड है. दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा? Schwann cells मिलेगा. At the end you can see the synaptic knobs. Right? Now synaptic knobs will help in the formation of synapses or the junction between two neurons. Okay, getting the point? Now when we talk about generation and impermeable to sodium ions, now जैसे ही impulse axon के एक portion में आएगा, the permeability of axolemma changes. Now your axon becomes permeable to sodium ions, or because of this there is influx of sodium ions. So जैसे ही influx of sodium ion होगा, right, it will lead to कहाँ गया? So whenever there is influx of sodium ions, it will lead to depolarization.
ओके, सो इसके वजह से आप देखोगे कि the impulse will move further or the action potential will move further, and then this permeability of the exolemma is short lived, and because of which again you will see कि थोड़े time बाद the permeability will again change, or you can say rather restored, and there will be efflux of potassium ions leading to repolarization, right? So remember कि रीपोलराइजेशन का कारण क्या है? एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस. डीपोलराइजेशन का कारण क्या है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ sodium potassium pump. Okay, so please have a look everyone, and remember that these are the important points that we are discussing here, important for NEET examination. Yeah, okay. So next is synapse. Now like I told you that synapse is a junction between two neurons. दो तरह के synapse होते हैं, एक होता है electrical synapse, एक होता है chemical synapse, right? One is electrical synapse and one is chemical synapse. Okay, synapse दो तरह के होंगे, electrical and chemical, right? So in electrical synapse you will see that the presynaptic and the postsynaptic membranes are close together. मतलब इतना ज्यादा क्लोज होते हैं, कोई भी गैप नहीं होता है in between and the postsynaptic membrane of another neuron. So in such case we need neurotransmitters to be released in the synaptic cleft that will bind to the receptors present on the postsynaptic membrane. So neurotransmitters like acetylcholine, like dopamine, right? So they will bind to the receptors present on the postsynaptic membrane, and then only the action potential will be able to move further. Okay. Now इसके लिए responsible होते हैं calcium ion channels. So when the impulse reaches here, there will be opening of the calcium ion channels that will push the synaptic vesicles towards the periphery. Synaptic vesicles के अंदर होते हैं neurotransmitters. Okay, so this is about synapse, right? So just go through it everyone, and please don't forget to like the session. Yes. Okay, so next is the human brain. So when we talk about brain, it is divided into cerebrum, cerebellum, and the brain stem. Right, cerebral hemisphere is connected by corpus callosum. The right and left cerebral hemisphere will be connected by corpus callosum, right? That help in sensory, motor, memory, and intelligence. Right. Now remember that it will have frontal, parietal, temporal, and the occipital lobes. Now when we talk about cerebellum, it coordinates the voluntary movement. Now this is a point जो आपको नहीं मिलेगा NCERT में, but this is important, right? And it helps in the maintenance of posture, balance, the way you walk, that is gait, right? When we talk about brain stem, so brain stem includes the midbrain and pons and medulla oblongata, right? So brain stem में आता है midbrain, then pons, then medulla oblongata, right? So it is controlling the respiration, heart rate, blood pressure, right? Now
रिमेंबर दैट यहाँ पर हाइपोथैलेमस के फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स. ओके, सो हॉर्मोन्स वाला पोर्शन हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी the last chapter, that is chemical coordination and integration, that include the endocrine glands. Okay, so in endocrine glands, the first gland that we are going to discuss will be hypothalamus and the pituitary gland, right? तो चलिए पहले hypothalamus की बात करते हैं और फिर pituitary gland की बात करेंगे. Yes everyone, so let's talk about hypothalamus first, then we are going to discuss about pituitary, right? So hypothalamus gland will be releasing hormones and we classify those hormones as releasing and inhibitory hormone. So releasing or inhibiting hormone hypothalamus release करता है, that controls the anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland 6 hormones release करता है. Humans में एक और hormone release करेगा, melanocyte stimulating hormone, right? So how you are going to remember the hormones from anterior pituitary gland? Flat peg. Okay, so FSH, F for FSH, L for LH, then A for ACTH, right? T for TSH, P for prolactin and G for growth hormone. MSH वैसे तो intermediate pituitary gland से release होता है, but in humans it is merged with the anterior pituitary gland, right? So they will go and stimulate the target organs and these are proteinaceous hormones. Coming to posterior pituitary gland या neurohypophysis, it is only storing and releasing 2 hormones, that is ADH or vasopressin and oxytocin, right? So ADH will help in water reabsorption from DCT and collecting duct. Oxytocin helps in uterine contraction and milk ejection. Okay. So growth hormone का दूसरा नाम है somatotrophin. So disorders हम देखेंगे, just in case there is deficiency of growth hormone, it will lead to dwarfism. ज़्यादा है तो it will lead to gigantism or acromegaly. Gigantism in child and acromegaly in adult. Coming to TSH, it will stimulate the thyroid gland to release its hormone. ACTH will stimulate the adrenal cortex, right? Remember that FSH and LH are termed as gonadotropins and ADH. Okay, so ADH from posterior pituitary will go and cause reabsorption of water from DCT and collecting duct. So note down the hormones and its function, everyone. So note down the hormones and its function and please don't forget to like the session. अच्छा, अब याद रखो कि ADH के डेफिशिएंसी से क्या होता है. ADH के डेफिशिएंसी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, राइट? सो डायबिटीज दो तरह के होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस व्हिच इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड द सेकंड वन इज डायबिटीज इंसिपिडस व्हिच इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ADH. और इसमें क्या होगा? इसमें होगा डायूरेसिस, डायूरेसिस. ओके, तो अगर ये समझ में आया है, वी विल मूव ऑन टू thyroid gland. Now thyroid gland releases tetraiodothyronine which is thyroxine and T3 triiodothyronine, right? जिसके लिए चाहिए होता है, जिसके बनने के लिए चाहिए होता है हमें iodine, right? Now remember that there is one more hormone released by the thyroid gland but from the parafollicular cells and that is thyrocalcitonin, TCT. अब T3 T4 तो iodothyronine है, but when we talk about TCT or calcitonin, okay, calcitonin is protein hormone, it is protein hormone. और ये T3 and T4 क्या है? iodothyronine hormone है, right? Now calcitonin का क्या काम है? It reduces the blood calcium levels, right? Now hyperthyroidism का example है Graves disease, that is exophthalmic goiter. Hypothyroidism का example है cretinism in child and myxedema in adult. And goiter is enlarged thyroid gland again because of iodine deficiency. तो ये भी example है बच्चा hypothyroidism का. हाँ,
तो कंफ्यूज नहीं होना है हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, coming to parathyroid gland releases parathormone, PTH hormone, and it increases the blood calcium level, right? Coming to adrenal gland have two parts, adrenal cortex and adrenal medulla. एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, राइट? ओके, कॉर्टिसोल एक बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है विच इज एंटी इंफ्लामेटरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये स्ट्रेस हार्मोन भी है. इट ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. एल्डोस्टेरॉन की बात करें, इट हेल्प्स इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन फ्रॉम डीसीटी. मेड्यूला से रिलीज होते हैं दो कैटिकोलामीन हार्मोन्स, विच इज एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जो कि है इमरजेंसी हार्मोन्स. एडिसन्स डिजीज क्या है, ये नाम लिखा है एनसीईआरटी में, एग्जाम में पूछा जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ एड्रेनल इनसफिशिएंसी व्हेन द एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स आर रिड्यूस्ड. Then comes Cushing syndrome. It is because of excess of cortisol. तो एडिसन्स डिजीज आप मिस नहीं करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? So जी, please have a look and take a screenshot and let me know if you have any doubt, any question, any confusion, anyone. Easy? सभी नोट डाउन करेंगे. और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज वॉच द रिकॉर्डिंग. एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर जो है हमने यहाँ पर समराइज किया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, लाइक करना मत भूलो, सेशन को लाइक करो प्लीज. ओके, तो लाइक करेंगे, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे, बिकॉज सारे ही सेशंस यहाँ पर होने वाले हैं यूजफुल. चलिए, और कौन से ग्लैंड्स हैं और डिसऑर्डर्स हैं जो हमें याद रखना है? पैंक्रियास. तो पैंक्रियास की हम बात करेंगे अगर, तो पैंक्रियास हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. लाइक अल्फा सेल्स विल secrete glucagon that increases the blood glucose level. Beta cells releases insulin that lowers the blood glucose level. Insulin promotes glycogenesis, okay, that is formation of glycogen from glucose. तो ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लूकोज कम होगा ब्लड में. एंड इट ऑल्सो प्रमोट ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स. जितना सेल्स ग्लूकोज यूज करेंगे, ब्लड ग्लूकोज कम होगा ना, राइट? जब हम ग्लूकेगॉन की बात करते हैं, मैंने बताया कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है. कैसे बढ़ाएगा? बाय ग्लाइकोजेनोलिसिस. ये क्या, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है. सो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज बनेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा. डायबिटीज मेलाइटस कब होगा? बिकॉज ऑफ लेस इंसुलिन प्रोडक्शन और बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय द सेल्स. सो बेसिकली जब इंसुलिन का लेवल ब्लड में कम हो रहा है, इट इज लीडिंग टू डायबिटीज मेलाइटस. टाइप 1 में नो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड और this is juvenile diabetes mellitus. Type 2 is maturity onset diabetes mellitus. जब इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है बट इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, राइट? सो इसे हम मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं या इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, वेरी कॉमन इन ओल्डर एज, राइट? कमिंग टू गोनाड, टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. ओवरी रिलीज करता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट? So estrogen is responsible for female secondary sexual characteristics and progesterone will maintain the pregnancy. LH surge is important for ovulation and FSH stimulate the follicular growth, okay, and spermatogenesis. तो LH and FSH के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, यस और नो? चलिए, बाकी के और ग्लैंड भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, ओके, जो रेगुलेट करेगा स्लीप वेक साइकिल या सर्केडियन रिदम. थाइमस रिलीजेस थाइमोसिन, इंपॉर्टेंट फॉर मैच्योरेशन ऑफ T lymphocytes and it degenerates after puberty.
एट्रियल वॉल रिलीज करता है एएनएफ, एएनएफ करता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, रिड्यूस ब्लड प्रेशर. ओके, किडनीज रिलीज करते हैं एरिथ्रोपोइटिन दैट विल हेल्प इन आरबीसी प्रोडक्शन. एंड जीआईटी से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जो रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, पीसेट. नाउ इसमें से एंड जीआईपी, तो सिक्रेटिन जो है इट स्टिमुलेट पैंक्रियाज टू रिलीज बाइकार्बोनेट एंड वाटर, राइट. तो सिक्रेटिन किस पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा पैंक्रियाज पे, और ये क्या रिलीज करता है, बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर. ठीक है. वहीं सीसीके पीजेड नाम क्या है इसका, कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन. So what it is doing, it stimulate the gallbladder to release bile juice and it stimulate pancreas also to release enzymes, right. So CCK PZ enzymes release करने में help करता है. GIP is gastric inhibitory peptide, also termed as enterogastron, and it is antagonist to gastrin. तो जो gastrin करेगा उसका opposite कौन करेगा, GIP. ओके, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. लाइक कर देंगे सेशन को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को अगर हम न्यू यूजर है तो. पीडीएफ के लिए जाना है टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. यस एवरीवन, या राइट. चलिए एक बार डिसऑर्डर हम रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. सो अगर ज्यादा जीएच ग्रोथ हार्मोन हुआ चाइल्डहुड में, अगर होता है, इट लीड्स टू जाइजेंटिज्म. एडल्ट एज में इट लीड्स टू एक्रोमेगाली. ड्वार्फिज्म होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन. देन डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. देखो डायबिटीज इंसिपिडस लिखा है यहाँ पर, इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. डायूरेसिस होता है, पानी रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा है डीसीटी में तो बाहर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. गोइटर इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, स्वेलिंग हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, राइट. हाइपोथायरॉइडिज्म है ये. क्रिएटिनिज्म इज ऑल्सो हाइपो, देखो मैं हाइपो लिख देती हूँ यहाँ पे ना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. So creatinism is also hypothyroidism but in child. तो अगर मदर को आयोडीन डेफिशिएंसी है प्रेगनेंसी के टाइम में, बच्चा जो होगा उसको होगा क्रिएटिनिज्म. क्रिएटिनिज्म में होता है लो आईक्यू, राइट, स्टंटेड ग्रोथ, राइट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ, म्यूटिज्म, राइट. सो दिस इज द क्रिएटिनिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म इन चाइल्ड. ग्रेव्स डिजीज होता है बेटा एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर, राइट. इट इज एग्जांपल ऑफ हाइपर थायरॉइडिज्म. T3 T4 जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है. एक्सोफ्थेल्मिक मतलब आई बल्ज आउट करेंगी, राइट. वेट एकदम कम हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है. रिमेंबर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड शुगर हाई हो जाएगा, राइट. नाउ कमिंग टू टेटनी. टेटनी इज बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड या लो पैराथायरॉइड हार्मोन. एडिसन्स डिजीज भूल जाते हैं बच्चे पढ़ना, क्या होता है, इतना कॉमन है नहीं. So Addison disease भी याद रखना है, it is because of low cortisol and aldosterone. So basically adrenal cortex gland से hormones जो है वो कम रिलीज होंगे, ठीक. Cushing syndrome वैसे हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, बट पता होना चाहिए that it is because of increase in cortisol. Diabetes mellitus तो हमें पता है deficiency of insulin या insulin resistance के वजह से होता है. And erythroblastosis fetalis होता है जब मदर है RH नेगेटिव एंड फीटस है RH पॉजिटिव. ओके, सो बहुत अच्छा समरी है ये डिसऑर्डर्स का जो पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में. प्लीज लाइक कर दो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट. एवरीवन स्क्रीनशॉट लेंगे, लाइक करेंगे सेशन को, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को. यस यस एवरीवन. ओके, तो एक ही जगह पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए हैं. होप दिस इज हेल्पफुल. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन फास्ट. चलिए, तो इसके साथ ही हमारा सेशन होता है आज का समाप्त, राइट.
छह चैप्टर हमने रिवाइज किए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिल केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. सो होप दिस सेशन वाज यूजफुल. डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब कर दो चैनल को नहीं किया है तो, एंड टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले सकते हो. अगर आपने पूरा सेशन नहीं देखा है तो आप पूरा सेशन देख लो. ठीक है, 6 चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, है ना. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के कवर किए हैं यहाँ पर. Thank you so much everyone. See you all in the next class. Bye bye. Take care.